Hello dear friends, Vande Matram. Welcome again to a new lecture of P block element. Okay, group number 18 noble gases. Okay, in our last lecture हमने ये पढ़ा था कौन कौन से एलिमेंट नोबल गैसेस में आ सकते हैं. That are helium, neon, krypton, xenon, radon and oganesson. In today's lecture we have to learn about oganesson and some physical properties of the group number 18 noble gases element. So first is about the oganesson. Oganesson is nothing but the element of the group new element of the group number 18 with symbol Og, capital O and small g, with atomic number 118 and with the atomic mass 294. The electronic configuration for the, I repeat, the electronic configuration for the oganesson is radon 5 14 60 10 7s2 7p6. As we know, ns2 and p6 is the common electronic configuration for the inert gases. So 7s2 7p6, that is the normal electronic configuration. Okay, where oganesson can be produced in a very less quantity because of its radioactive nature. Sir, first is we are talking about their noble gases, and at the same time you are talking about their radioactivity. Yes, oganesson is typically group number 18 element with the electron, with the atomic mass, with the atomic number, but as far as the reactivity, oganesson is working like or act like radioactive element with T1 half lifetime is 0.7 millisecond. Okay, very less half lifetime. Because of that, there is no much नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑगनेसन इज देयर. सो उसके लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, तो काफ़ी प्रॉपर्टीज ऑगनेसन की प्रेडिक्ट कर रखी है, बट देर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ टाइम. क्लियर? नाउ इट्स अबाउट दी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर हियर. सो हम लास्ट से शुरू करेंगे आज with the specific reason. Okay, first is electron gaining enthalpy. सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी हो, यहाँ पे हमको क्वांटिटी या फिर वैल्यू बहुत कम मिलेगी बिकॉज दे आर इनर्ट, दे आर नोबल, देयर ऑक्टेट इज ऑलरेडी फुल, दे आर नॉट वांट टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो if they not want electron and we are going to give electron, हमको देना है, उसको नहीं चाहिए, then हमको उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी इम्प्लांट करनी पड़ेगी. सो इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की वैल्यू वेरी मच हाई, एकदम ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुपीज. बाकी के ग्रुप के कंपैरिजन में इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी हाई है. ज़्यादातर गैस में इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी हमने पढ़ी थी, दे आर नेगेटिव फॉर्म, वो नेगेटिव है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट विथ एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल रिमूव, वहाँ पे एनर्जी रिमूव हो रही है, होती होगी. बट इन द केस ऑफ इनर्ट गैसेज, इन द केस ऑफ नोबल गैसेज, दे नॉट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड वी आर गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन. आपको लेना ही पड़ेगा, इसके साथ हमको एनर्जी भी देनी पड़ेगी. सो electron gaining enthalpy of the noble gases is not negative value but it is positive value. Sorry, हमको देनी पड़ेगी. So this electron gaining enthalpy of the noble gases are positive, बाकी सबकी कैसी थी? नेगेटिव थी. सेकंड, जैसे हम नीचे आ रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है सर? द रेडियस इंक्रीज हो रहा है. सो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सरफेस में आ रहा है, जिसको एक्सेप्ट करना है, वो सेंटर से कितना है? दूर है. बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, लाइक इन एवरी ग्रुप, क्या होगा यहाँ पे? द अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज लेस विद द डिक्रीजिंग ग्रुप. जैसे ग्रुप में हम डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, सो नीचे जाने के साथ ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी. क्लियर है? ओके, नाउ इट्स अबाउट एटॉमिक रेडियस. ये भी सेम दी एनी अदर ग्रुप्स क्या होगा? विद दी एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज इन डिक्रीज डाउन द ग्रुप. जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, दिस इज हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. जैसे नीचे आते हैं उसके साथ एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी. दैट वी ऑलरेडी नो. क्लियर? सेम विद आयोनिक रेडियस, इफ दे आर कन्वर्ट इनटू आयन. ओके, यहाँ पे हम एक्चुअली आयोनिक रेडियस की बात बाय कंसेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट वांट टू बीइंग कन्वर्ट इनटू आयन. वो जैसे ऐसे ही अपने स्वरूप में रहना चाहते हैं. देन अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एज वी डिस्कस हियर, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और डोंट वांट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन.
उसको ना चाहिए नहीं डोनेट करना है, और हमको क्या करना है वहाँ से, इफ दिस इज एक्स इज नोबल गैस और उसको क्या करना है, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन, हमको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है, सो दैट हमको जो एनर्जी इम्प्लांट करनी है, दैट एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी or ionization energy. This value is bigger than any other groups because of again its full octet, because of its noble nature. तो बाकी के ग्रुप के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होगी. बट हाउएवर जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और नीचे आने के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. क्यों होगी सर, बिकॉज ऑफ दिस देयर वॉल्यूम्स, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्यूम्स द आउटर इलेक्ट्रॉन इज far away from the center, and because of that attraction is lower, and attraction is lower, so we have to implant lower energy. So अगर बाकी ग्रुप से आप कंपेयर करते हो तो बाकी ग्रुप के कंपैरिजन के साथ यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. बट in a similar group, in a same group number 18, ionization enthalpy is decreased down the group because of its volume and because of screening effect also, that we already know. Now electronic configuration, helium is 1s2 form, but apart from the helium बाकी के सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NH2NP6. आई रिपीट NH2NP6 फुल ऑक्टेट. बट जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखा NH2NP6 बट N-1D10 and N-2F is also present there. So जल्दी से हमको देखना है सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो प्लीज बी कीप कॉन्सेंट्रेटेड. वी कैन सी helium's atomic number is 2 and electronic configuration is 1s2, but neon's atomic number is 10 and electronic configuration is helium 2s2 2p6. Helium is actually 1s2. Then argon with atomic number 18, neon 3s2 3p6. Same with krypton, atomic number is 36, argon 3d10 4s2 4p6. xenon atomic number 54, krypton 4d10 5s2 5p6, and radon again 86, atomic number 86, and electronic configuration is xenon 5f14 5d10 6s2 6p6, and last but not the least oganesson, as already we know, radon 5f14 6d10 7s2 7p6, and there are some more additional physical properties are given in the table that we have to remember for the MCQ portion. Clear? Okay friends, so now it's time to learn physical properties of the noble gases. Okay, यहाँ पे physical property noble gases के हमको दे रखे हैं that we have to learn. Noble gases are monoatomic. They are not diatomic like O2, H2, N2, or polyatomic like Sat or P4. They are monoatomic. Xenon, radon, krypton, helium, neon, all of them are monoatomic. The second and most important property is they have no particular smell, they have no particular taste, they have no particular color. So they are colorless, odorless, and tasteless, but they are sparingly soluble in water. Okay, that is the tendency, but not solubility in the order of like any other gas, is sparingly soluble in water. Clear? They have very low melting point and boiling point. Sorry, the noble gas is containing very low melting point and boiling points because of a specific reason. The reason is there is particular intermolecular forces are in different gases like CO2, H2, N2, O2, H2, etc. But about the, if we talking about the inert gases or noble gases, they have no particular intermolecular attraction forces. Okay, yes, there is a possibility of one weak intermolecular forces, that is dispersion force, that you learn in 11th science, but as we know that force is very lower in the terms of concentration, so they conceive on very much weaker intermolecular attraction force, or we can say dispersion forces. Because of this weak forces or lack of any other strong forces, they have no higher melting point and boiling point. They conceive lower melting point and boiling point. So
only weak dispersion force is present. There is no strong intermolecular forces. Okay, then helium, the boiling point of helium is 4.2 Kelvin. That value you have to remember. Okay, क्यों हमको याद रखनी चाहिए? Because this is the lowest boiling point among the all elements that are known. जितने भी known मतलब पहचान में अभी हम जानते हैं सभी एलिमेंट्स में सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है. सो हीलियम विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन. क्लियर? these are the physical properties of the noble gases. Now it's time to learn about, there is some additional physical properties is also there. So it is particular about the helium. Okay, we are talking particular about the helium. Okay, helium has unusual properties. कैसी एक unusual property है? The property to pass through the glasses, pass through the rubber, pass through the plastics etc. ज़्यादातर केस में सभी चीज़ें जो लैब में यूज होती है, हीलियम कैन पास थ्रू द ग्लासेस, रबर एंड प्लास्टिक विच आर वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरी. सो helium has an unusual property of diffusing through or passing through the most commonly used laboratory materials like rubber, glasses and plastic. So this is the unique property of the helium. Okay, now we have one question है और question का आंसर भी अभी आपके सामने ही है. Noble gases have very low boiling point. Why? Here is the reason. They have no any strong intermolecular forces. Exception है वहाँ पे एक weak force है, that is dispersion force, and that is not enough to increase the melting point and boiling point. So because lack of strong intermolecular attraction forces, उसकी वजह से उसका melting point and boiling point down है. Clear? So these are the reason behind the lowest boiling point and melting point of the noble gases. Clear? Okay friends. All of us know that noble gases are non-reactive or inert. Okay, वो reactive नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं they are less reactive. What are the specific reason behind this? They are less reactive. उसके पीछे का reason क्या है? Reason is clear that they have full octet. In the case of helium there is 1s2. In the case of another noble gases, not halogen, another noble gases, they are ns2 np6. Okay, that is also a reason, and one more reason behind this is क्या होगा? That is the higher value of ionization enthalpy, or you can say ionization potential, at the same time electron gaining enthalpy or electron gaining potential. Okay, very positive electron gaining potential and very high value of the ionization potential are also the reason that noble gases are non-reactive, or we can say less reactive. So the question is, why noble gases are less reactive or non-reactive? Okay, as we know, helium's electronic configuration is 1s2. At the same time other noble gases have ns2 np6. Because of that full octet, वो क्या करेगा? They are not going to donating or not going to accept the electron. That's why they are non-reactive or less reactive. At the same time, because of high ionization enthalpy and more positive electron gaining enthalpy, they are non-reactive. That is the reason for the less reactivity or no reactivity of the noble gases. But यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है दे आर लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव मीन्स दे आर रिएक्टिव बट द रिएक्टिविटी इज very less. Okay, so because of that we have to talking, or we have to discuss the reactivity, although that is less, but we have to discuss that less reactivity. Okay, in a simple way. So the question is, discuss the chemical reactivity, or in a simple way less chemical reactivity of group number 18 or noble gases. So with the starting of the identification of the noble gases, जब identification हो रही थी उसके बारे में synthesis हो रहा था, they are noble gases, तब से ट्राई हो रही थी दैट टू नो द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में. बट ओकेशनली जितने भी बार वो एक्सपेरिमेंट हुए, मोस्ट ऑफ द केस द एक्सपेरिमेंट वाज फेल्ड. ओके, देयर इज नो पर्टिकुलर रिएक्टिविटी ऑफ द नोबल गैसेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. बट very first time by the Neil Bartlett, University of British Columbia, observed the reaction of noble gases in 1962. Okay,
तो पहली बार उसने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही आइडेंटिफाई और ही सिंथेसाइज्ड वन रेड कलर कंपाउंड नॉट विथ हेल्प ऑफ नोबल गैसेस बट विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, O2PtFe6. O2PtFe6 इज रेड कलर कंपाउंड, उसने ये बनाया था। सर यहाँ पे तो देर इज नो नोबल गैस आर देर and we are talking about reactivity of the noble gases, but he observed one thing, that the first ionization enthalpy of oxygen is very much similar to first ionization enthalpy of xenon. We can see the first ionization enthalpy of oxygen is 100 and 175 kilojoule per mole. At the same time, the first ionization enthalpy of xenon is 100 and 170 kilojoule per mole. They are nearest value, or you can say they are similar value. Difference of very only 5 kilojoule per mole. Okay, so he tried to make or synthesize the compound like the O2PtF6 in place of O2. He is going to try with xenon. Okay, so he tried xenon with PtF6. पहले उसने ट्राई किया था PtF6 with O2, now PtF6 with xenon, and he got xenon PtF6 again, one more red color compound. That was the first synthesized compound with noble gases, or that noble gases is xenon. So first noble gases compound is xenon PtF6, and that is synthesized by Neil Barthelot, and the reason or the base that he has been used, उसने बेस जो यूज़ किया था, that base is the similar first ionization enthalpy of oxygen and xenon. So then सब अभी ट्राई शुरू हो गई, और सबने पहले ये किया, from the noble gases they are trying to make compounds or solution or any component with the help of xenon. Okay, so डिफरेंट ट्राई के बाद एक चीज़ सामने आई, that xenon can be reacted, or xenon can be formed or synthesized various compound with high electronegative compound like fluorine and oxygen. So after some time, the various compound of the xenon has been synthesized with the help of higher electronegative compound, that is fluorine and oxygen. So then the xenon with the fluorine and with the oxygen, various compound has been synthesized. Okay, then it's time to learn about krypton. Krypton के साथ क्या हुआ? There is no various compound of the krypton has been synthesized. Only one non-compound till date is krypton difluoride, KrF2 for the krypton. Okay, and similar with the radon. Radon is able to make various compound, but they cannot be isolated. So they cannot be isolated, so that we have to track them. हमको उसको track करना पड़ेगा. Then the compounds of halogen or compounds of radon, compounds of radon identify like radon difluoride etc. By रेडियो ट्रैकर टेक्निक हम उसको ट्रैक कर सकते हैं. वी कैन नॉट आइसोलेट देम बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ अगेन रेडॉन. एज वी नो, रेडॉन इज द बाई प्रोडक्ट और डीके प्रोडक्ट ऑफ द रेडियम. सो द कंपाउंड ऑफ रेडॉन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई alone, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दे कैन बी ट्रैक्ड बाय द रेडियो ट्रैकर टेक्निक्स. ओके, टिल डेट argon, neon and helium, they are not able to give compounds like xenon, like krypton, like radon. Okay, as per as this syllabus, if we are talking out the syllabus, out from the syllabus, there is argon, neon and helium. उसके कंपाउंड हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, बट दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस केमिकल टेक्निक. ओके, कहीं केमिकल टेक्निक में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन जॉन प्यूरिफाइंग मेथड in our another chapter of 12th science. Clear? So these are the chemical reactivity of group number 18. At the same time, why they are not reactive or why they are less reactive. Okay, so in the next lecture we are going to learn xenon compounds and the uses of the xenon compounds. Clear? So दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए.
We are the noble gases in group 18 with 6 elements, and a 7th which is predicted to be. We are the noble gases in group 18. We make up a group of chemical elements with similar properties. My name is helium, atomic number's 2. My atomic mass is 4. My symbol's Ag, now here's some more. I'm a colorless, odorless, tasteless, and a non-toxic gas. I'm at the top of my group and the second lightest element at last. Helium's used to inflate scientific and party balloons. I'm also used as a cooling medium for a large hadron collider, it's true. Hi, I am neon, my atomic number's 10. My atomic mass is 20, my symbol's Ne. Let's learn about me then. Neon gas is used to promote things in advertising signs, and I'm the 4th most abundant element in the universe. Am I am argon. My atomic number's 18. My atomic mass is 39. Ar is my symbol. C. Argon's often used when an inert atmosphere is needed. You can find me in period 3 in group 18. That's where I'm seated. We are the noble gases in group 18 with 6 elements, and a 7th which is predicted to be. We are the noble gases in group 18. We make up a group of chemical elements with similar properties. I am krypton, my atomic number's 36. My atomic mass is 83. My symbol's Kr in the mix. Krypton's used in some types of photographic flashes, used in high-speed photography. I'm pretty bright, so you may want to wear sunglasses. Xenon is my name, my atomic number's 54. My atomic mass is 131. My symbol's Xe, here's some more. I produce a brilliant white flash of light when I'm excited electrically. I'm also widely used in strobe lights for many reasons, you see. Hi, I'm radon, my atomic number's 86. My atomic mass is 222. My symbols are, and these are my tricks. I'm chemically inert, but I am radioactive. My emitted radiation's used in cancer therapy, it is. I'm oganesson, my atomic number's 118. My atomic mass is 294. OG's the symbol on your screen. Synthesized in 2002 by a team of scientists. I have the highest atomic number and mass of all known elements. We are the noble gases in group 18 with 6 elements, and a 7th which is predicted to be. We are the noble gases in group 18. We make up a group of chemical elements with similar properties.